Hello, children. How are you all? I hope you all are fit and fine. Dear children, in this video, I am going to take you for a virtual nature walk. Do you know where it is? Can you guess? It is the most beautiful and open place in our school. Yes, I'm going to take you in our school garden. So, let's begin. It is the most beautiful and open place in our school. It helps us in preserving the environment and nature by planting fruits, flowers, and many trees. So let's begin our walk. Dear students, you will see here a huge variety of plants and green grass, bushes, chirping birds, and beautiful flowers. All these things we will see in our school garden. Do you know? All the plants have same parts and same function, but they appear unique with different types of roots, stems, leaves, flowers, and seeds. So, students, we can classify plants on the basis of their height, tenderness of stem, branches, and their lifespan. I will show you different types of plants in our school garden. Let's begin from here. These plants are of short size with soft, green and delicate stem. यानी कि इसका जो तना होता है वो बहुत मुलायम होता है और ग्रीन कलर का होता है. And do you know, many of such plants have few branches or maybe they have no branch. यानी कि we can call them branchless. इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं ग्रास. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रास. आप सभी ने देखी होगी ना पार्क में या फिर आपके आसपास जो गार्डन है वहां पर तो आपने हरी हरी घास जरूर देखी होगी. और आपके स्कूल में तो इतना बड़ा गार्डन है, आपने देखा होगा पे ग्रीन ग्रास है और आपको खेलने में भी बहुत आनंद आता है, राइट? चलिए. Okay, now I am going to show you medium-sized plants. They are taller than hops and shorter than trees. We call them shrubs. Shrubs. Example, rose plant. आपके स्कूल गार्डन में भी रोज प्लांट है. देखिए ये रहा, है ना सुंदर? इस पर बहुत ही सुंदर फूल आते हैं. और इसके अलावा श्रब्स की बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि तुलसी प्लांट. और यहाँ पर आपको और भी ऐसे ही मीडियम साइज प्लांट दिखाई दे रहे हैं. देखिए, यस, वी कॉल दीज प्लांट श्रब्स. आइए अब आगे चलते हैं. नाउ these are big and tall plants. They have very thick, woody and hard stem. Do you know what we call that? Yes, we call it trunk. We can see many trees in our school garden. Now look at here. This is a neem tree. This neem tree is very beneficial. We also called it medicinal plant. इसका हम दवाई की तरह भी प्रयोग करते हैं. बच्चों, neem commonly used in shampoos for anti-dandruff.
Now students, let's have a look of neem tree and the leaves of neem tree. आप देख सकते हैं नीम के पेड़ पर किस तरह की पत्तियां आती है, उनकी शेप कैसी है और आपको पता है उसकी हाइट करीब करीब 15 से 30 मीटर हो सकती है और ये बहुत पुराने हैं। आपके स्कूल में जो ये पेड़ है, नीम का जो पेड़ है, ये काफी पुराना है। इसके लिए आप अपने मम्मा पापा से पूछिएगा कि कितना पुराना हो सकता है, वो आपको और भी अच्छे से बताएंगे। आपको पता है ऐसे बहुत सारे ट्रीज हमारे स्कूल में लगे हुए हैं जो ना केवल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, उनके अलग अलग फायदे भी हैं। जैसे कि मैंने बताया नीम ट्री के बारे में, इसकी मदद से हम बहुत सारे रोगों से लड़ सकते हैं। अब देखिए, ये है जामुन का पेड़ यानी कि जामुन ट्री। ये भी आपके स्कूल गार्डन में ही है और देखिए कितना टॉल है। नाउ लुक एट दिस पार्ट, वी कॉल इट बार्क। जो आउटर लेयर होती है ट्रीज की, वी कॉल इट बार्क, BARK, bark. Okay, we have already studied about the different parts of trees. So you can identify those parts here. So, dear children, I hope you really enjoyed this video. Now it is your turn to have a walk in your home garden. आप सभी अपने गार्डन में घूमते हुए और अपने गार्डन में लगे प्लांट्स के नाम बताते हुए एक सुंदर सी वीडियो बनाकर हमें भेजिए। उस वीडियो को आपके फ्रेंड्स भी देखेंगे और वो भी जान पाएंगे आपके गार्डन में कौन कौन से पौधे हैं। Take care and have a nice day.